Dear friend, today we will start steam generator part 3rd, and under which we will discuss high pressure boiler and drought. The contents are need of high pressure boiler, why we need a high pressure boiler, and different types of the high pressure boiler like Lamont boiler, Benson boiler, Leffler boiler, Velox boiler, and fluoride boiler, drought, natural drought, height of the chimney, artificial drought, mechanical and mechanical drought, forced drought, induced drought, balance drought, and then steam jet, under steam jet drought, forced steam jet drought, induced steam jet drought, and then references. So first we will discuss the need of high pressure boiler, means why we need high pressure boiler. So as you know, efficiency of Rankine cycle increases with the increase in the mean temperature of heat addition. Means as the uh, pressure will increase, as the pressure will increase, then the saturation temperature corresponding to the that pressure will increase. So the the temperature of heat addition will also increase. So if the temperature of heat addition will increase, then the efficiency of Rankine cycle increases. So since efficiency is high, so for same power output, less amount of heat is required. So if the efficiency will be high, then the less amount of heat will be required for the same work output. And water circulation is forced circulation. Here, the water circulation in the boiler is forced circulation. So if the water circulation will be forced circulation, then the velocity will be high. So scaling in the boiler tube will be low, and we will see the high category of high pressure boiler. Means if the pressure is less than 20 bar, then it will be low pressure boiler, and when it will be in between the 20 to 50 bar, then it will be medium pressure boiler, and if the pressure will be more than the 75 bar, then it will be high pressure boiler. And these are the different types of the high pressure boiler which we will discuss. So first one is Lamont boiler, and then Benson boiler, Leffler boiler, and Velox boiler. And we will see most of the high pressure boiler are water tube boiler. Why? Uh, as we know, the stress is PD by 2T. So the D is the diameter, and P is the pressure, and T is the thickness. So if we will see, this is the tube and this is the cell. So if the water will be inside the cell and fire will be the inside the tube, then it will be the fire tube boiler. So if the water will be outside the tube, means inside the cell, then the diameter will be this one. Here if you will put this one, then you will get more stress. Means the tube diameter is less than the cell diameter. So if the water will be inside the tube, then the diameter will be less. So you will get less stress. So in the most of the high pressure boiler, we circulate water inside the tube for less stress generation. So here we will see the most of the high pressure boilers are water tube boiler. So if so next one is Lamont boiler. Lamont boiler capacity is 5 ton per hour, and pressure is 170 bar. It's a vertical boiler. You are seeing here the boiler is vertical, and forced circulation of water is used. Steam is generated around at 500 degrees Celsius. And if you will see here, this is the Lamont boiler. In this this is the combustion chamber, and here the feed water is coming, and going inside the
boiler, and this is the circulation of the feed water here, and then it will convert in the steam, and this steam will be saturated steam, and then it will go inside the boiler drum, and after boiler drum it will comes inside the superheater, then it will be superheated, and this superheated will be go inside the where we will require it. And if you will see, this is the air preheater and this is the chimney. So here the fuel burns, and the flue gases moves from bottom to the upward side. So this is the air preheater, means this flue gas when leaves the chimney, then before leaving the chimney it comes in the contact with air preheater. So this air gets preheated, and this preheated air is used in the combustion chamber. Here you will see this is coming in the combustion chamber. So if you will preheat the air, then the efficiency of boiler will increase. And this one is economizer, means the feed water which is coming from outside is first coming in the economizer, means the if the water is coming from outside, then its temperature will be around 30 degrees Celsius. So it will gets preheated till the saturation temperature inside the economizer. And second one is Bunsen boiler. Bunsen boiler is also a vertical boiler. The capacity of the boiler is 150 ton per hour, pressure is 200 bar, temperature is 650 degrees Celsius. It is drumless boiler. So the important thing is this is drumless boiler. So if there will be no drum, then its weight will be very less, means it will be light in the weight. So if it will be light in the weight, so it can be portable easily. And this boiler comes to its peak value within 10 minutes. So we can say that its response is high. Here we will see the water from hot well. So the feed pump feeds the water in the economizer and then comes here, and it gets converted into the steam, and this steam, this will be in this saturated condition. It comes here, it comes here in the superheater. This is the superheater. So it gets superheated here, and then comes out where we require it. And this is the cold air. This is the air preheater. Here cold air comes in, and hot air gas comes to the combustion chamber, and the movement of the flue gases from the bottom to the top, and exhaust gases exits from this chimney. And third one is the Loeffler boiler. So we will see here the Loeffler boiler, and this boiler consists of a turbine as well, means here a turbine will be attached with this boiler. Steam is itself generated by superheated steam, so there is no soot deposition in the economizer, means here the steam is generated through the superheated steam. We will see here, this is the feed water coming, and this is the superheated steam. This feed water and this superheated steam mixes here, and it generates the steam, means this water converted into the steam, means this superheated steam transfers its heat to the feed water, and this feed water converted into the steam, and this saturated steam comes here over the furnace and then goes to the superheater, and then here
again comes in the, and this superheater runs the turbine, and after running the turbine comes in the feed water, and these are the flue gases. Flue gases goes to the superheater and then economizer and then chimney, and then in the chimney. This is the feed water pump. The feed water comes here, and this is the economizer. So water gets preheated here and comes here in the this heat exchanger, where water and superheated steam gets mixes. Normally this boiler used in marine application, and capacity of this boiler is 100 ton per hour, and pressure, operating pressure of this boiler is 140 bar. Temperature is 500 degrees Celsius, means the operating temperature of this boiler is nearly 500 degrees Celsius. And the fourth one is Velox boiler. So we will see here the Velox boiler. So capacity of the Velox boiler is 100 ton per hour. Efficiency is about 55 to 60%, and there are vertical tubes. These are the vertical tubes, and this is fire tube boiler. This boiler is fire tube boiler, and flow of gas is supersonic. So here the most important point is the flow of gases, means which gases? The flue gases. The flow of flue gases is supersonic. So you have to remember this point, means this boiler uses supersonic flow of the gases. So here we will see there is a gas turbine, and this is the axial compressor. So what is the use of this axial compressor? This axial compressor compresses the air which are using for the combustion chamber. So after compressing the air, its temperature will increases, and this air comes in the combustion chamber, and this axial compressor is run by the gas turbine. This gas turbine, as we will see, the flue gases is in the supersonic speed. So its speed is very high. So this high velocity flue gases can be used for the power generation in the gas turbine. So the gas turbine will be run by the flue gases, and that power generated by the gas turbine will be utilized for the compressing the air in the axial compressor, and that compressed air will goes in the combustion chamber. And here this is the combustion chamber, and here these are the tubes, fire tubes, and the flue gases comes in the fire tubes, and then steam is generated which goes in the steam separator. Means here the saturated steam goes upward, and the liquid particle comes down and again goes in the boiler, and this saturated steam goes in the superheater and then to the prime mover. Prime mover means the steam turbine. So you will see a question. The distinguishing feature of the Velox boiler is that, so options are is drumlins, second one is uses supersonic, operates under supercritical pressure, uses indirect heating. So we have seen that Velox boiler uses supersonic flow of the gases. So option will be B. And what will be the benefit of the supersonic? Due to the supersonic flue gases, its heat transfer coefficient increases. So if the heat transfer coefficient will increase, then the heat transfer area will be decreases. Means the required area will decrease. So we will need less. Means the required size of the heat exchanger will be lesser than the previous one, when the gas velocity will be more. Gas velocity will be
less. So if the gas velocity will increase, then its heat transfer coefficient will increase, and by increasing the heat transfer coefficient, its size will decrease. Next one is fluoride bed boiler. So there is a bed of refractory sand of very fine particle, which is initially heated with the help of flammable LPG gases. So there will be a fine particle and which will be heated by the LPG gas. So if we will heat these particles, then its temperature reached to 650 degrees Celsius, and air is passed from the bottom. That is why it is called fluidized bed boiler. Means that hot air is passed from bottom of the bed, so its temperature reached to 650 degrees Celsius. So what will be the benefit of the heating the bed? If we will heat the bed, then when the coal, which is the solid fuel, will come on the bed, it will burn easily. So we will see now coal is burned on the fluidized bed boiler. So complete burning of coal takes place. Actually, its temperature is very high, so the burning of the coal will be very good. And fluidized bed also can be of dolomite stone. Means the refractory sand which we are talking here is a kind of dolomite stone. Instead of we can use dolomite stone instead of refractory sand. So we will see the next question. Match list first with list second and select the correct answer using the codes given below. So here are the some types of the boilers and their classification. So we have seen, I think, all of these boilers. So the first one is the Babcock and Wilcox boiler. So Babcock and Wilcox boiler is so we will find here. Babcock and Wilcox boiler is a no force circulation fire tube. Not this is not a fire tube. This is a water tube boiler. Babcock and Wilcox boiler is a water tube boiler, and Lancashire boiler is a fire tube boiler, and Lamont boiler is a forced circulation. We will see if we will go in the option, then Babcock and Wilcox boiler is a water tube boiler. So option 1 is matching, and Lancashire boiler is fire tube boiler. So option 1 is matching here. And we can also see the other types of the boiler. The Cochrane boiler is a vertical boiler. We have seen earlier, Cochrane boiler is vertical boiler. So option will be A. The next question is assertion and region type question. So assertion is Benson boiler. Benson boiler is much lighter than other boilers. Benson boilers raised to critical pressure in Benson boiler permits doing away with steam drums. Since Benson boiler is drumless boiler, so it will be the lighter. So region is the given region is boiler pressure raised to critical pressure in the Benson boiler permits doing away with steam separating drums. So it doesn't require steam separating drums. So there will be no steam separating drums. So it will be the light in weight. So the region is correct for the given assertion. So the option will be A. Means both A and R are individually true, and R is correct explanation of A. Means the assertion is also correct, and region is also correct, and region is also correct explanation of the assertion. So the option will be A. So next we will see the drought. What is the drought? So we will see here, drought is a small pressure difference causing flow of air and gases through the boiler. So drought is a small pressure difference which causes the flow of air or the flue gases inside the boiler. So it is essential to supply the quantity of air for the combustion to the grate
and to remove the product of the combustion. So we have seen that we have to supply the fresh air inside the boiler for the complete combustion of the fuel, and after the burning of these fuels we have to also remove the flue gases from the furnace. So for these we have to create some pressure difference. So due to the pressure difference, the flow of these flue gases occurs. So and this pressure difference is created by different meanings, and we will see later. So there are different types of the drought, and the first one is the natural drought, which is caused by the chimney, and other one is artificial drought. Artificial drought is artificial drought are also of different types. First one is mechanical, and the second one is steam jet. Means the artificial drought is also created mechanically and by steam jet. So mechanical artificial drought is also classified in the different types. First one is forced mechanical drought, induced mechanical drought, and balanced mechanical drought. And under the steam jet, there will be the forced steam jet drought and induced steam jet drought. So now we will see natural drought. Natural drought is obtained by the use of chimney, which is produced by density difference between the column of hot gas inside the chimney and cold air outside the chimney. So here the drought means the pressure difference. Pressure difference is created by the chimney. So how the pressure difference is created by chimney? If we will see here, the inside the chimney there will be the hot gas, and outside the chimney there will be the atmospheric air, which will be at lesser temperature than these flue gases. So if you will see the density of these two gases, so here the density of the flue gas will be at temperature Tg, which is higher than this atmospheric air. So if the temperature will be higher, so if you will use P equal to rho RT, so if the temperature will be higher, then density will be less. So if the density will be less, मीन्स दी डेंसिटी से क्या होगा, जो इनसाइड दी चिमनी है उसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका डेंसिटी कम होगा और इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा. तो अगर देखेंगे प्रेशर देखेंगे तो प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा. तो इसका प्रेशर ज़्यादा है और इसका प्रेशर कम है, क्योंकि इसका डेंसिटी क्या है, कम है. डेंसिटी कम क्यों है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है. टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए इसका डेंसिटी कम है, इसका प्रेशर कम होगा और इसका प्रेशर ज़्यादा होगा. तो जब अगर इसका प्रेशर ज़्यादा है और इसका प्रेशर कम है, तो फिर तो फ्लो कहाँ से किधर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा फ्लो. यानी कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो इनसाइड दी चिमनी आना चाहिए. बट हियर क्या होता है कि चिमनी से फ्लू गैस हमको बाहर निकालना है. तो कैसे होगा, हम देखेंगे कि यहाँ पे एट द ग्राउंड लेवल हमारी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, ग्राउंड लेवल मीन्स कि वो हाइट के बेसिस पे भी क्या होती है, चेंज होती है. ये जो डेंसिटी है वो चेंज होती है. तो अगर देखेंगे जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसकी क्या होता है, हाइट के बेसिस पे डेंसिटी इसके कंपेयर में जो आपकी इनसाइड जो चिमनी है उससे कंपेरिजन में इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा डिक्रीज होती है. तो जब ऊपर जाएंगे तो इधर क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा कम हो जाता है. किसका, इसका एटमॉस्फेरिक एयर का. तो एक तो हो गया टेम्परेचर के बेसिस पे और दूसरा हो गया हाइट के बेसिस पे. जो डेंसिटी होती है वो हाइट के बेसिस पे भी क्या होती है, डिक्रीज होती है. यहाँ देखेंगे एच के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. किस कौन, ये आपकी डेंसिटी. तो जो डेंसिटी आपकी है वो डिक्रीज होगी दोनों की. जब ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी किसकी, दोनों की डिक्रीज होगी. लेकिन क्या होगी, इसकी ज़्यादा होती है एटमॉस्फेरिक एयर की और इसकी कम होती है. तो हमको उस हाइट तक जाना है कि जब आउटसाइड जो प्रेशर है वो इनसाइड प्रेशर से कम हो जाए. तो जब इनसाइड प्रेशर से जब कम हो जाएगा आउटसाइड प्रेशर, तो हमारा जो फ्लो होगा वो इजीली बाहर हो जाएगा. तो हमें वो हाइट क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा कि किस हाइट पे हमारा कितना प्रेशर डिफरेंस हो कि हमारा जो फ्लो हो
वो स्मूथ हो जाए बाहर. Then we will see the height of the chimney, means the calculation of the chimney. So if we will see here, the main element क्या है जो combustion में participate करते हैं, वो क्या है, एक कार्बन है. जो फ्यूल में क्या होता है, फ्यूल में more than 80% क्या होता है, कार्बन होता है. कार्बन will come with the oxygen and here the CO2 will form and a huge amount of gas, a huge amount of heat will release. And second one is the hydrogen. Hydrogen is also present in the fuel. So hydrogen will come with the oxygen and it will form hydrogen, H2O. So this H2O means the water, and water will also convert into steam due to the heat generated here. So this will, ये हमारे लिए क्या बेनिफिशियल नहीं है क्या. वाटर जब जनरेट होगा तो क्या होगा, दिस विल आल्सो यूटिलाइज द हीट जनरेटेड हियर एंड this will convert into the steam. So but the amount of the hydrogen in the fuel is very less, means near about 4%. So we didn't consider this equation and we only consider this equation. And for the calculation of the height of the chimney, we will take some reference point. So first one is T0. T0 means the reference temperature, which is 0 degree Celsius or 270 degree Kelvin, and pressure is atmospheric pressure, which is 101.3 kilopascal. And we will take M. What is M? M is the required mass for the combustion of 1 kg of fuel. Means for the combustion of the 1 kg of fuel, the required mass is known as M. And what will be the mass of the flue gas? If you will see the furnace, this is the furnace, and in the furnace air and fuel comes in and they get burned and they get out as a flue gas. So what will be the mass of the flue gas? So if we will apply here the conservation of mass equation, then we will get M1 in plus M2 in equal to M out. So what will be the M out? M1 plus M2, यानी कि M plus 1 equal to M plus 1 kg. So what will be the mass of the flue gas? Mass of the flue gas will be the M plus 1 kg. मीन्स दी जो गैस फर्नेस से जो बाहर जाएगा वो उसका मास क्या होगा, M plus 1 kg. And then we will see and for the calculation we will use this equation, which is ideal gas equation, PV equal to MRT, and we will find the reference density at reference temperature and pressure. So the reference density will be rho naught equal to P by R T naught. From here, if we will take V from here to here, then this will be the rho. So this will be the rho equal to P by RT. So if we will take the air density, so air density will be rho equal to P by RTA. TA क्या है? TA is the temperature of air. So if we will multiply by T naught and divide by T naught, and if we will rearrange, then we will get rho naught into T naught by TA. So rho equal to rho naught into T naught by TA at temperature TA. So this density is at temperature TA, and the volume of the air at TA equal to M by rho, means the mass by density. So M by rho is rho naught into T naught by TA. So the VA equal to M into TA by rho naught into T naught. And here we will take one assumption, and the assumption is that volume of the hot gases at temperature TG means TG means the temperature at which the combustion takes place. So volume of the hot gases at temperature Tg equal to the volume of air supplied at volume Tg, means the volume of air and volume of hot gases remains constant at the Tg. So if we will calculate the volume of the flue gases, so the volume of flue gases will be the volume of air at Tg. So we know here V equal to M into TA by rho naught into T naught. So here volume क्या है? Volume of air at temperature TA है.
तो अगर वॉल्यूम ऑफ एयर एट Tg लेंगे तो क्या हो जाएगा, TA के जगह पे क्या हो जाएगा, Tg हो जाएगा. सो द Vg विल बी इक्वल टू m into Tg by rho naught into T naught. And next we will see the density of the flue gas. Density of the flue gas will be the mass of the flue gas upon the volume of the flue gas. So mass of the flue gas is m plus 1. हमने अभी देखा है m plus 1 is the mass of the flue gas and this is the volume of the flue gas which is here. So this will be the density of the flue gas. So what is the pressure difference? The pressure difference as we know P equal to rho gs. तो देखेंगे इस एयर का जो आउटसाइड एयर है उसका प्रेशर और जो आपका इनसाइड है उसका प्रेशर, उसका जो डिफरेंस होगा तो वो देखेंगे प्रेशर डिफरेंस. प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, रो ए इंटू जी एच माइनस रो जी इंटू जी एच. तो P इक्वल टू रो जी एच. तो ये क्या है, एयर के लिए हो गया रो ए जी एच, ये क्या है आपका गैस के लिए हो गया तो रो जी इंटू जी एच. सो जी एच विल बी कॉमन एंड रो नॉट इंटू टी नॉट बाई टी ए. ये हम पहले ही रो ए निकाल चुके हैं. एंड रो जी इज दिस and then we will take one more thing common, rho naught into T naught from both. So this will be the rho naught T naught into GH and will be 1 by TA minus m plus 1 by m into TG. So अगर हम देखेंगे इसकी वैल्यू रो नॉट एंड टी नॉट की वैल्यू, रो नॉट टी नॉट की वैल्यू क्या होगी, अगर रो नॉट इक्वल टू P बाई R इंटू टी नॉट, यानी कि रो नॉट टी नॉट इक्वल टू P बाई आर. P इज क्या है, यहाँ पे हमारा P था वो क्या था एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड R क्या होगा एयर के लिए 0.287. सो रो नॉट और टी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 350. सो व्हाट विल बी द प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस विल बी दी 350 GH इंटू 1 बाई TA माइनस 1 बाई TA माइनस m प्लस 1 बाई m इंटू TG. और इसकी यूनिट क्या होगी प्रेशर की, इसकी यूनिट है पास्कल में. सो ये H क्या है, H यहाँ पे हाइट ऑफ द चिमनी, TA क्या है टेम्परेचर ऑफ एयर एंड ये क्या है टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस एंड m प्लस 1 इज द मास ऑफ द फ्लू गैस एंड m इक्वल टू मास ऑफ द m इज इक्वल टू मास ऑफ द एयर. अगर जो हम इसको देखेंगे ये क्या है आपका प्रेशर है आपका. अगर इस प्रेशर को हम देखना चाहेंगे कॉलम ऑफ द वाटर, सो P इक्वल टू क्या था रो जी एच. तो P इक्वल टू रो जी एच. तो वहाँ से अगर देखेंगे रो क्या होगा वाटर का 1000 और जी कैंसिल जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका रो P इक्वल टू रो जी एच. P इक्वल टू रो जी एच. तो रो क्या आ जाएगा, रो को हमने कन्वर्ट कर लिया मिलीमीटर में हो गया ये, और जी कैंसिल हो गया और जो स्मॉल h आया वाटर कॉलम वो हो गया H इक्वल टू 353H इंटू 1 बाई TA माइनस m प्लस 1 बाई m इंटू TG mm. mm क्यों आया, जो डेंसिटी था उससे हमने डिवाइड कर दिया तो mm हो गया, अदरवाइज इट वुड बी इन दी मीटर. सो एंड दिस इज द फार्मूला इन द वाटर कॉलम. ये क्या h क्या है वाटर कॉलम के रिस्पेक्ट में चिमनी की हाइट का फार्मूला. ये h क्या होगा चिमनी का हाइट होगा और ये h क्या होगा, ये h होगा आपका वाटर कॉलम. ये वाटर कॉलम कैसे निकाल सकते हैं, ये आप जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे इजीली दे सकते हैं. P इक्वल टू रो जी एच, h कैसे कैलकुलेट करेंगे. एंड देन वी विल सी दी आर्टिफिशियल रॉड. तो आर्टिफिशियल में हम कौन सा देखेंगे, आर्टिफिशियल में भी मैकेनिकल है और स्टीम जेट से है. तो हम पहला देखेंगे मैकेनिकल. तो मैकेनिकली क्या है, आर्टिफिशियल रॉड रिफर्स टू द एक्सटर्नली क्रिएटेड रॉड. मीन्स द आर्टिफिशियल क्या होगा, कुछ आर्टिफिशियली हम कुछ इक्विपमेंट यूज करेंगे तो उस इक्विपमेंट के थ्रू जो हमारा प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट होगा उसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल रॉड. वहाँ पे चिमनी के थ्रू हो रहा था, वहाँ पे कोई अलग इंस्ट्रूमेंट हम यूज नहीं कर रहे थे, चिमनी का एक बार लगा दिया और वो चिमनी क्या करेगा क्रिएट करेगा. यहाँ पे हम क्या करेंगे कुछ फैन या ब्लोअर लगाएंगे. तो मैकेनिकल रॉड प्रोड्यूस्ड यूजिंग फैंस और ब्लोअर्स. सो आर्टिफिशियल रॉड वी विल सी हियर द मैकेनिकल एंड आर्टिफिशियल. एंड मैकेनिकल इज आल्सो डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, फोर्स्ड, इंड्यूस्ड एंड बैलेंस्ड. एंड स्टीम जेट इज आल्सो divided into the 2 parts, forced and induced. So mechanical rod is produced by fan or blower and steam jet is produced by the steam.
So we will see one by one. Forced draught. Forced draught. We will see air under pressure may be fed to stokers or grate for which a fan of blower is, means here we will use blower. Blower क्या करेगा, फर्नेस के पहले लग जाएगा, तो ये क्या होगा, ये ब्लोअर जो क्या करेगा, एयर को पुश करेगा अंदर, फर्नेस के अंदर पुश करेगा, तो एयर का फ्लो क्या होगा, अंदर का फ्लो होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्रिएट कर रहा है ब्लोअर, यानी एयर यहाँ क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है एयर को, तो इसको बोलेंगे फोर्स्ड फैन। आपको दो क्वेश्चन लेंगे, एफडी फैन एंड आईडी फैन, ये इंटरव्यू में पूछा था, एफडी फैन एंड आईडी फैन। तो फोर्स्ड फैन क्या होगा, ये क्या एफडी है, एफडी फैन बोलते हैं जो फोर्स्ड ड्रॉट क्रिएट करता है। फोर्स्ड ड्रॉट यानी कि जो एयर जो लगा होगा इधर, जो फोर्स करेगा एयर को, चिमनी के बाहर जो लगा हुआ है ये एयर को फोर्स कर रहा है, तो ये होगा फोर्स्ड ड्रॉट। अगर जो एयर फैन इधर लग जाए यानी कि जो सक करेगा, तो उसको बोलेंगे आईडी फैन। अभी उसको भी देखेंगे। यहाँ पे लग गया आपका एफडी फैन। एफडी फैन क्या करेगा, एयर को पुश करेगा अंदर, ये उससे क्या होगा, फिर ये इस प्रेशर के थ्रू क्या होगा, एयर मूव करेगा इधर, एंड देन आफ्टर द फर्नेस इट विल गोज सुपर हीटर एंड देन इट विल गोज इकोनोमाइजर एंड देन एयर प्रीहीटर एंड देन गो टू द चिमनी। And as due to the pressurized air pressure inside furnace becomes more than atmospheric pressure, so it should be properly sealed, otherwise gas may leak. So ये तो देख लिया हमने। And induced drought क्या है, देखेंगे। induced drought में आपका जो यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपके एयर पैसेज बने हुए हैं, यहाँ से एयर क्या अंदर जाने के लिए। एंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लोअर यहाँ लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम ब्लोअर लगा रहे हैं, यहाँ पे इससे पहले लगा रहे हैं ब्लोअर। तो ये ब्लोअर क्या करेगा, एयर को सक करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, एयर को सक करेगा। यहाँ पे एयर क्या कर रहा था, यहाँ पे फैन एयर को पुश कर रहा था, और यहाँ पे इस ब्लोअर का एयर क्या करेगा, इसको सक करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे आईडी फैन। इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन, यानी कि आईडी फैन। एंड फैन इज लोकेटेड एट बेस ऑफ द चिमनी इज इंड्यूस्ड ड्रॉट, सो एयर रिड्यूस्ड so as to reduce pressure at fuel bed। तो यह क्या सक करेगा, तो प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा इधर यहाँ पे। तो प्रेशर जब यहाँ पे रिड्यूस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगा, आपका फ्लो होगा, किसका, फ्लू गैस का। द फैन इज इंड्यूस्ड ड्रॉट सेल हैंडल हॉट फ्लू गैस, क्योंकि यहाँ पे फोर्स्ड था, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर लेके फोर्स कर दिया था, यहाँ पे इसको कूल एयर मिलते थे, बट हियर इट इज सकिंग दी hot flue gases, so it will come in the contact with the hot flue gases। and next we will see the balanced drought। balanced drought में क्या होगा, हम देखो here both forced fan and induced drought fan are employed। यहाँ पे दोनों फैन हम यूज करते हैं। अगर जो हमारा जो ड्रॉट है वो किसी एक फैन से नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों फैन यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए फोर्ड फैन, और यहाँ पे एफडी फैन, यहाँ पे आईडी फैन। यहाँ पे हमने दोनों फैन यूज़ किया है। अगर जो हमारा जो ड्रॉट जो हमें क्रिएट करना है वो एक फैन से इजीली नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को यूज़ करेंगे। तो उसको हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, बैलेंस ड्रॉट बोलेंगे। एंड नेक्स्ट आर्टिफिशियल ड्रॉट इज स्टीम जेट ड्रॉट। यहाँ पे जो हम ड्रॉट क्रिएट करेंगे आर्टिफिशियली, वो किससे करेंगे, स्टीम जेट से करेंगे। यहाँ पे देखेंगे फोर्स्ड स्टीम जेट ड्रॉट। The steam jet is located so as to force air and steam up through the bed, and that is steam jet is placed before the grate। यहाँ पे देखेंगे क्या है, ये स्टीम जेट है, ये क्या आपका फायर ट्यूब है। तो यहाँ से स्टीम जेट क्या होगा, स्टीम जेट हम सप्लाई करेंगे। ये स्टीम जेट क्या करेगा, इधर से जाएगा, तो इससे क्या करेगा, यहाँ पे जो आपका फ्लू गैसेस होगा उसको क्या करेगा, सॉरी ये आपका इंड्यूस्ड है, ये ड्रॉट है, फोर्स्ड ड्रॉट है। तो यहाँ पे क्या है, ये स्टीम जेट यहाँ से क्या कर रहे हैं, स्टीम जेट यहाँ सप्लाई करें इधर, यहाँ से इधर। तो स्टीम जेट अगर सप्लाई होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे अगर देखेंगे वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, इधर प्रेशर कम हो जाएगा, ड्यू टू दी काइनेटिक हेड। यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, फ्लू गैसेस इधर से आ रही, ये फर्नेस है, फर्नेस से ये क्या फायर ट्यूब है, फर्नेस से आपकी फ्लू गैसेस इधर आ रही हैं। इधर अगर टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक है तो यहाँ पे इधर अगर जो प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लेस देन एटमॉस्फेरिक होगा। तो जब इधर प्रेशर क्या होगा,
इस साइड से इस साइड का प्रेशर कम होगा तो आपका जो फ्लो होगा फ्लू गैस का वो इजीली हो जाएगा, तो यहाँ से फ्लू गैसेस निकल जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे फोर्स ड्रॉट। यहाँ पे फोर्स ड्रॉट में क्या है, यहाँ पे आपका स्टीम जेट यहाँ से सप्लाई कर रहा है और ये स्टीम जेट इधर से जा रहा है, यानी कि इसको फोर्स करेगा। जो आपके फ्लू गैसेस हैं उनको फोर्स कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ इंड्यूस्ड हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज कर रहा था। तो यहाँ पे ड्यू टू दी लेस प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा था, ये सक कर रहा था यहाँ पे फ्लू गैस पे। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे प्रेशर इसका ज़्यादा होगा फ्लू गैस का, तो ये क्या करेगा, इसको फोर्स करेगा इस साइड में, और फोर्स करेगा यहाँ से फ्लू गैसेस फिर यहाँ से इधर को निकल जाएंगे। So if you see the induced steam jet rod, so steam jet is placed near the stack with direction to smoke box so as to induce ये आपका induce के लिए, ये force के लिए। And then the references.